Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Just a minute. Let me have a quick tech check. I think everything seems to be fine. Hello, Rishpanda. Good morning, Beta. Yes, everything seems to be fine. Right. So, what was the news for yesterday? मतलब अगर social media खंगाला जाए, तो you will get the गर्मी only, which you can see I'm also facing. Right. You can see the power cut. You can see some other particular event जो कि energy associated and heat associated है. So yes, जो heat waves है, they are becoming one of the major, what we can say, talk point in India, and that is new thing, है ना. पहली बार ऐसा हुआ है from last what we can say 10-15 years when Gen Z is actually talking about heat wave, climate change, something like this. तो थोड़ा सा तो है. So India और India के around, मतलब not only India, the world is going to see a super El Nino, yeah, right? Or you can say mega El Nino. This is something जो कि आपके लिए नया हो सकता है. But I have seen this particular situation. So, Daksh. Though this was a small El Nino, you can say every year there is a problem during the summers and between the monsoon. जब monsoon winds का direction change जाता है because of low and high pressure areas in the Pacifics. राइट, तो पैसिफिक रीजन में लो हाई प्रेशर एरिया करंट ये चीज बनती है. सो दैट इज द रीजन कि क्या है क्या नहीं है. सो थोड़ा सा इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को वो करें. 2026 में सही में दुनिया खत्म है. We cannot say the world is going to end, but yes, the world is definitely going to suffer for its wrongdoing. दो यहाँ पे थोड़ा सा environment और थोड़ा सा winds वगैरह जो है उनका भी इफेक्ट होगा. बट है, होता ये है कि जो इंडिया है, इंडिया का मानसून शिफ्ट हो जाएगा और इंडिया का मानसून कम हो जाएगा. एंड तुम यकीन नहीं करोगे, देयर इज अ कूलर दैट इज रनिंग अराउंड द हाउस. इट्स अ लार्ज कूलर. एंड few days back, that's like 10-12 days back, it was cooling the entire house properly. But now it is it's struggling to create the entire house cool. So है, चीजें हैं थोड़ी सी problematic है. But soon we are going to have this sorted out. Let's hope for the best. So अगर मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करूं, सुपर एल नीनो इज ब्रूइंग इन द पैसिफिक एंड इज प्रोजेक्टेड to significantly impact India throughout the 2026, potentially leading to a record-breaking heat and weakened monsoon. So El Nino का prime effect तो ये होगा कि भैया जो heat होगी, that will rise, and जो monsoon होगा, that will get weak. राइट. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है. हीट बढ़ेगी एंड मॉनसून कम होगा तो वाटर ट्रैपिंग कम होगी तो सूखा, दैट इज ड्रॉट के चांसेस बढ़ जाएंगे. वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑन व्हाट वी कैन से दिस फर्टिलाइजर थिंग. बट हाँ, आज के पेपर में ही गवर्नमेंट ने बोला है कि वी आर स्टेबल विद द फर्टिलाइजर. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, दे आर करेक्ट. सो दीज आर द टू मेजर इफेक्ट जो इंडिया को देखने को मिलेगा. सो जो फॉर्मेशन विंडो है, राइट, अगर उसकी बात करें तो जो WMD है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट, उनका कहना है द करंट कंडीशंस आर न्यूट्रल. राइट, मैं उनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली पढ़ रहा हूँ तुम्हारे लिए. द करंट कंडीशंस आर न्यूट्रल. द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड अदर एजेंसीज प्रेडिक्टेड अ शिफ्ट टुवर्ड एल नीनोस इन द अर्ली मई टू जुलाई. So early May to July जो है, that is something that is going to cause the shift like toward the El Nino. But हाँ, ये shift जो है ये अभी भी मतलब ये जो particular condition है, that is still under the neutral condition. So chances ये हैं कि हो सकता है ऐसा ना, right? The intensified forecast is something जो कि थोड़ा सा हमें परेशान करने वाला है. The forecasters indicate that high probability of this particular event becoming a super and mega El Nino, characterized by the sea surface temperature rising more than 2 degrees Celsius above the average in the Central Pacific.
सो अगर 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर सेंट्रल पैसिफिक का बढ़ता है, दैट इज गोइंग टू बी टर्न्ड आउट टू बी सुपर एल। अरे अभी एल नीनो तो बनेगा, दैट इज फॉर श्योर। वी आर गोइंग टू हैव एन एल नीनो, दैट इज श्योर, बट सुपर एल नीनो दैट इज गोइंग टू हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक इज गोइंग टू राइज बाय द 2 डिग्री सेल्सियस। नाउ अंडरस्टैंड कि what is exactly happening. Pacific is the largest ocean in the world. Pacific has huge water volume, actually largest and the deepest ocean. So it has the maximum water volume. So what exactly happened? The winds which are flowing above Pacific, right? तो होता ये है कि जो अपर हॉट वाटर है, राइट, दे एक्चुअली शिफ्टेड विद द विंड, एंड द लोअर कोल्ड वाटर जो होता है वो ऊपर आता रहता है। सो टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली क्या रहता है, मेंटेन रहता है। बट इफ दिस विंड इज नॉट फ्लोइंग, दैट मीन्स द हॉट वाटर विल रिमेन एट द अपर सरफेस, और ऊपर का जो एयर एयर प्रेशर है वो कम रहेगा, द टेम्परेचर विल बी हाई, एंड दैट इज व्हाट एल नीनो इज। ओके सर, आम सीटी एस्पिरेंट, कभी कभी मुझे इतना नर्वस फील होता है कि मुझे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनते, तो पढ़ो अभिषेक, दैट इज व्हाट वी कैन डू। सो दैट इज द रीजन कि अल नीनो आता है। इफ द विंड्स आर स्ट्रांग, देन डेफिनेटली जो है कि कहना चाहिए, हॉट वाटर जो है वो शिफ्ट होता रहता है, कोल्ड वाटर ऊपर आता रहता है। तो एल नीनो जैसी कंडीशन नहीं होती, बट दिस ईयर दिस इज गोइंग टू बी क्रिटिकल। तो वो अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, if the temperature of the surface of the Pacific will go above 2 डिग्री सेल्सियस, then definitely it's going to be a super El Nino. Now talking about the India's condition, तो इंडिया में जो हीट वेव कंडीशंस है, कल भी हमने बात की थी कि इंडिया में हीट वेव्स बन रही हैं, राइट। तो वो चीजें तो है ही। इंडिया इज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग अर्ली एंड एक्सट्रीम समर, दिस इज व्हाट वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सेइंग। India is already experiencing early and extreme summer heat. In April 2026, the temperature reaches to 47.4 degrees Celsius in Banda, UP, and several regions are recording 43 to 45 degrees Celsius average temperature. This is something that is huge. I mean, if you are talking about the temperature in the mid-April, which is closing to 45, that means it is extreme. राइट, तो इंडिया में ऑलरेडी ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज हीट डोम अगेन द सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्म, लाइक व्हाट वी कैन से फिनोमेना अकर्स हियर, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गर्मी की बात करूं तो समर्स में जो हॉट एयर होती है, राइट, दैट गोज अप, met with the clouds and other thing, then comes the rain. बट हो ये रहा है कि इन दोनों के बीच में देर इज अ लेयर ऑफ अ हाई प्रेशर गैस, एंड अगर ये हाई प्रेशर गैस है तो तुम्हें पता है गैस जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों चलती है। तो जो हॉट एयर विच इज सपोज टू गो अप, मीट विद द क्लाउड एंड गेट द रेन, वहां तक जा ही नहीं पाती, वापस आ जाती है। सो द हीट, राइट, दैट इज जनरेटेड ऑन लैंड रिमेन ट्रैप नियर द लैंड। सो इसको हम कहते हैं हीट टोन। टेक्निकली इट्स अ सिंपल फिनोमिनन कि जैसे यू बॉइल्ड अ मिल्क, है ना, सो यू गेट अ पैन, यू बॉइल्ड मिल्क, एंड उसके बाद आपने उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। तो जब आप ढक्कन लगाते हो तो दैट मिल्क रिमेन्स वार्म फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज एक्चुअली द हीट डोम दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। This is the reason why we are facing huge heat waves, and regularly you can find, like from the 9 a.m. to 10 a.m. that summer things started, and it lasts up to 12 a.m. at the night. Yes, in general, the major heat, what we can say, experience time limit is from 1 to 3 or 1 to 4 p.m. But this is regularly. If you go to the roads by the 7 p.m. or 8 p.m. or 9 p.m., you can experience that heat from the roads and concrete asphalt, from in your like in your eyes. So this is something because of concrete structure, asphalt structure, the jungle we are making, the concrete jungle, right? We were supposed to create forest with trees, but we are creating jungle with the concrete. क्योंकि छोड़ो, एक मूछ वाले अंकल को कोयला खोदना था, इसलिए उनके लिए जंगल दे दिया गया। रिमेम्बर दैट अरावली, इमेजिन करो अरावली भी नहीं होता तो नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया क्या फील करता।
प्रॉब्लम तो है दोस्त. सो दैट इज व्हाट हैपनिंग. जो पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हैं, जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इंडिया में असेस कर रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड इट हैज पोटेंशियल. तो उन्होंने चीजों के बारे में काफी असेस किया. एंड सीधे तौर पे उन्होंने बोला कि अ स्ट्रॉन्ग एल नीनो टिपिकली डिस्टर्ब्स द विंड विद द विंड पैटर्न, लीडिंग टू अ सब पार रेनफॉल ड्यूरिंग द क्रिटिकल जून टू सितंबर मॉनसून सीजन. जो मेन मानसून सीजन होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम जून टू सितंबर, राइट, यहाँ पे जो मानसून है वो कम होगा. सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर रिस्क. ओके, इंडिया की मेजर एग्रीकल्चर जो है दैट डिपेंड्स ऑन द रेन. सो इफ द रेन इज नॉट गुड, दैट मीन्स द एग्रीकल्चर yield इज नॉट गुड. Okay, so since approximately 70% of India's rainfall comes from the monsoon, a deficit could lead the smaller harvest economic strain for the nearly 50% population, right? And this is the population that is directly employed in the agriculture. तो ये चीज होगी. Third thing will be resource restraint होगी. Prolonged heat waves can reduce the rain and expected to increase the water retaining and cause the power cuts to demand the cooling peaks. यस. सो अगर गर्मी ज्यादा है तो कंक्रीट में एसी ज्यादा होगा. इफ एसी इज गेटिंग हायर, दैट मींस द पावर डिमांड इज गेटिंग हायर. एंड इफ द पावर डिमांड्स आर गेटिंग हायर, दैट मींस देयर आर गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिसिटी कट अराउंड द कंट्री, which I am facing, right? And if this is happening, that means farmers are also going to be suffered with the less water क्योंकि उनके पंप में electricity नहीं मिलेगी. So there are a lot of things that is going on. The last one is extreme weather. Experts warn that 2026 could be one of the hottest year recorded in India, comparable to the devastating 1877, 78, right? Even or more recent in 2015-16 El Nino. 1877-78 El Nino was something जिसने approximate 4 to 5 million people जो थे, उनको वो किया था. 40 to 50 million people जो है उनको अफेक्ट किया था, जिसमें से 10 million अकेले कहाँ थे, इंडिया में. So some of them we lost them, right, due to extreme heat and less food, and some of them suffered so badly that they never recovered from it. So this was the heat wave condition in India. What can we do? Earlier ACs were limited to urban, now even rulers are catching up. Yes, the problem is same. AC is a kind of stove which is keeping the inside cool, but all the high heat of inside it is releasing the outside. और बाहर क्या है, बाहर पेड़ नहीं है. You don't see trees or forests outside the buildings. You are seeing another concrete structure, and that structure too releasing huge amount of heat from the AC compressor. तो ये प्रॉब्लम तो होगी मित्र. ठीक है. सो दैट वाज व्हाट एल नीनो फॉर यू. और मेक श्योर करें कि हम इससे बच कैसे सकते हैं. You cannot stop a natural geographical phenomenon, right? Nature से fight करने सबकी बस की नहीं होती है. You cannot fight it, but you can prevent. राइट, एक टाइम लिमिट होता है विच इज 12 to 5. अगर मैं इस तरह की बात करूं, वैसे तो पीपल सजेस्ट कि 1 to 4 के बीच में बाहर नहीं निकलना चाहिए, बट आई बिलीव कि द थिंग्स आर देयर. आई हैव बीन आउटसाइड द हाउस ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर several different works, and I believe 12 to 5 is a time that you are supposed to stay inside the home until and unless it's a very 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 important. राइट, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, मैंने कल भी बोला था कि अम्ब्रेलाज जो है दैट इज गोइंग टू कम इनटू द पिक्चर अगेन. कैरी एन अम्ब्रेला. द थिंग इज कि व्हेन यू आर इन अ शेड ना, तो रिलेटिवली जो सन की डायरेक्ट हीट है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है. सो उसके कारण आपको हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशंस नहीं होंगी. थर्ड थिंग, कैरी वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड. Right, yes. When the temperature is more than 45, scientifically कितना सही है नहीं है. Yesterday I was reading one of the expert comment. Right, तो उनके ये मानना है कि when temperature is more than 45 degrees, then the temperature regulators in our body, for example, जो sweat glands and others होती हैं, they are not very effective. सो स्टे हाइड्रेटेड, कैरी एन अम्ब्रेला, सो दैट डायरेक्ट हीट ना हो, एंड आप जिस सराउंडिंग में हो विद द अम्ब्रेला उसका टेम्परेचर जो है वो 45 तक ना पहुंचे, सो दैट आपका स्वेट पोजीशन, स्वेट जो पर्टिकुलर कंडीशन है, जो वाटर हाइड्रेशन है, वो प्रॉपर है और आपको हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन ना हो.
And the last one, try to plant a tree and try to maintain it, not just for the photo. Yes, दुनिया भर में, I mean, can you imagine? There are people who have planted trees in our country, but I don't see any positive effect on it because of one reason. They plant a tree, they click a photograph, update it on their social media, then forget about that tree. So plant trees and try to maintain it, right? So that is what we can do. So that was the heat wave condition for India. Uh, a positive development in the Western Asian conflict. Right, US, Iran ka. What is the best part of this particular peace talk? Anybody can guess? The best thing is Iran and US are talking and Israel is getting ignored. हाँ, तो ये थोड़ा सा है. सो कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ आई हैं जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं. तो वन ऑफ देम इज द ट्रम्प रिव्यू प्रपोजल. Yes, so President Donald Trump met with his national security team in the Situation Room to review the Iranian peace proposal. So the peace proposal ईरान की तरफ से भेजा गया था. You have seen ना कि जो वो हैं क्या कहना चाहिए Arakshi, right? Abbas Arakshi, Iranian foreign minister. He visited Pakistan, then he went back to Oman, then he came back to Pakistan, then वहाँ से Russia गए थे. So he gave a proposal, a reviewed proposal for the peace to the Americans through Pakistan's administration, and that is what they are reviewing these days, right? ईरान की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव ऑफर है. अगर अभी भी नहीं हो सकता ये वारंट, तो आई एम रेडी कि भैया 26वीं दुनिया खत्म है. Iran has offered to reopen the Strait of Hormuz if the US lifts its naval blockade and end the war. Crucially, the proposal suggested to postponing the nuclear talks to later phase. So, पहले phase में they are going to end the naval blockade, right? And the Iran will open the Hormuz, and then they will end the war, and then they can talk about the nuclear talks. कि nuclear program पे हम क्या करेंगे? Enrich nuclear. US official reported that Trump is dissatisfied with the offer because it fails to address Tehran's nuclear program immediately. Secretary of State Marco Rubio stated that Iran cannot be allowed to normalize control over the international waterways. So, अभी ईरान का proposal बहुत प्यारा है. I believe कि Iran is having good proposal, but US की तरफ से they are not happy, they are not satisfied. The reason is quite simple. If the Strait of Hormuz remain in control of Iran, the Americans cannot show their victory in that particular war, and इसके कारण उनके politicians को Democrats हो या Republicans हो दोनों को काफी loss होने वाला है, right? So that is the reason. Pakistan continues to serve as a primary mediator, right? And ये सारी के सारी conditions जो हैं जो भी चीजें like जो discussion हो रहा है from one place to another, Iran to USA, that has been negotiated and transferred by the Americans, sorry, Pakistan itself, right? थोड़ा सा चीजें अच्छी हैं. अभी रिसेंटली अब्बास अराक्ची इज इन रशिया और वहां से भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सी बात करूं, तो सेंट पीटर्सबर्ग की मीटिंग में प्रेसिडेंट पुतिन हैज स्टेटेड दैट रशिया विल डू एवरीथिंग टू सिक्योर पीस इन द रीजन. So good thing is that Russia is also on the favor of peace. Oman is also seeing that we are ready to consultation the way we were doing before the war as well, right? And so that the seafarers can have a safeguard in the Strait of Hormuz. But ठीक है, चल रहा है. So now they have a particular proposal to discuss. US की तरफ से वो satisfaction जो है वो नहीं मिल रहा है. They are dissatisfied. That is what they are saying. But I believe they are desperate to make a deal. So we might we are going to see a very uh, positive week for when it comes to this particular conflict. क्योंकि भैया सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्ट्रप्टेड है. लेबनान में the Israelis are still killing the normal civilians, children, medical professionals, yeah, right? So we want to have stop on that as well, right? And so काफी सारी चीजें जो है वो वहां पे हैं. So let's hope for the best, we can get a positive outcome, राइट? कुछ और जो पर्टिकुलर वो है अपडेट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं.
तो जो मैरीटाइम अपडेट्स है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बोला जा रहा है कि हॉर्मूज से, राइट, जहाँ से 1/5 ऑफ ऑयल सप्लाई जो है वो होती है, क्या कहना चाहिए, जाती है, वहाँ अभी भी डिस्ट्रप्शन है बिकॉज ऑफ दिस स्टैंड ऑफ। UN Secretary General Antonio Guterres warned that the situation may risk in a global food emergency. Why global food emergency? Energy emergency तो होगी ही होगी. The thing is कि global food emergency because of one reason. फर्टिलाइजर्स जो हैं दुनिया भर में वो मिडिल ईस्टर्न रीजन से क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, so the people are not getting proper fertilizers, that means the yield of the production will go less and people are going to have a problem with the food. इसराइल में क्या हो गया इसराइल में यार, जस्ट अ मिनट। अपोजिशन पार्टीज मर्ज हो गई हैं इलेक्शन में नेतन्याहू को हटाने के लिए। नेतन्याहू को हटाने के लिए बहुत सालों से दे आर ट्राइंग हार्ड एक्चुअली। He is a corrupt leader. He is having charges against corruption, right? And he is one of the most, mm, what we can say, psychopath जो मारता ही रहता है लोगों को. So गाजा में genocide के बाद now they are planning for Lebanon's genocide. So this is something that is not at all welcoming. तो हो रहे हैं, that is a good thing. Right. US Treasury recently sanctioned a major Chinese refinery, Hungary Pharmaceutical, and 40 ships shipping firm as an economic fury operation. So Americans are not at all like stopping when it comes to putting sanctions or taxes tariff. So US Treasury Department recently sanctioned major Chinese refinery, right, Hungary Pharmaceutical, sorry, Petrochemical, and 40 shipping firms in an economic fury operation targeting the Iran's oil revenue. So why they are targeting the Chinese refinery? Because China is someone जो ईरान से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है, right? ईरान इज ऑल्सो प्लेइंग वेल. ईरान जो है वो अपने शिप्स वगैरह जो है रीरूट कर रहा है, रीराउटिंग कर रहा है, राइट. जो फूड इंपोर्ट्स हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी, the oil export that they are making is making through Iranian and Pakistani waters, right? There the Americans cannot affect. तो ईरान अपने हिसाब से they are actually winning in this particular economic situation because their import and export is not blocked at any cost. But Americans are expanding, like spending billions on the daily basis just to make sure they can satisfy their need. So soon they are going to have what we can say peace. Let's hope for the best, and then discuss. Let's discuss this. Arvind Kejriwal and Sonakanta Sharma, फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने कल एक वीडियो डाला, राइट. द वीडियो वाज समथिंग, see, technically, I don't do politics here, but Kejriwal has started learning how to defeat the game of narrative and how to play the game of narrative. Right? Yes. So, Aam Aadmi Party's convener, national convener, and the former chief minister of Delhi, Arvind Kejriwal, declared that he will neither appear in person nor be represented by the lawyers before Justice Shwanakanta Sharma of the Delhi High Court in the excise policy case. So you know कि CBI जो है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में जो एक्साइज ड्यूटी स्कैम था उसके वर्डिक्ट के अगेंस्ट, हाय जादू, right, Delhi High Court गई है CBI, and it is being represented by Tushar Mehta himself, right, and the judge is Justice Swarnikanta Sharma. And there was a video in social media like 2 weeks back when Arvind Kejriwal put his particular views in front of everyone in that particular. We need iron to cut iron. Wow. You can say this, right? And says कि आप जो है इस केस से खुद को रिक्यूज कर लें so that I can have justice. And she asked कि why you cannot have justice in my court. So उसने बोला कि you are regularly visiting the Arvind Kejriwal said कि you are regularly visiting the events of RSS associated organizations, which I am against of, and your children are being associated with the opposition lawyers panel.
So technically, I have no particular hope that I am going to get justice here, right? But Justice Sonikanta Sharma says, ki, no, this is not something that is going to happen. On the 27th of April, she said ki the plea is being rejected of a recusal, and I'm going to hear this particular case. So on 28th of April, मतलब कल अरविंद केजरीवाल ने बोला कि ना तो मैं जाऊंगा ना मैं अपने वकीलों को भेजूंगा. So technically, if he is not going to Delhi High Court for any or not be represented in the Delhi High Court, then the judgment will come and then he will challenge it in the Supreme Court itself. That is what people are saying. But this is historical actually, because I was trying to find out some events like this, whether there is any event specifically in India, राइट, जो इस टाइप की किसी पर्टिकुलर चीज को रेप्लिकेट कर रहा हो, बट आई डिडंट फाइंड एनी ऑथेंटिक इवेंट जहाँ पे जो वो है अक्यूज है सिर्फ कि ना तो मैं खुद को डिफेंड करूंगा ना मैं लॉयर भेज रहा हूँ, राइट. बिफोर दैट इट वाज सरदार भगत सिंह शहीद आजम, है ना, जिन्होंने खुद को वो किया था, बट ही डिनाइड कि भैया हमें लॉयर नहीं चाहिए, हम खुद को डिफेंड कर लेंगे, बट वो खुद को रिप्रेजेंट करते थे. बट ऐसा नहीं है. आई एम नॉट कंपेयरिंग केजरीवाल फ्रॉम लाइक शहीद आजम आजम भगत सिंह. भगत सिंह इज राइट. केजरीवाल अभी बहुत छोटा बच्चा है उनके सामने, बट ठीक है. दैट इज व्हाट आई फील कि अभी तक कुछ ऐसा इवेंट हुआ नहीं. अमेजिंग मूव बाय अरविंद केजरीवाल. आई बिलीव पॉलिटिकली इट्स अ गुड मूव. जस्टिस सुनगा द गवर्नमेंट टू टेक डाउन एवरी वीडियो ऑन केजरीवाल. फर्स्ट दे डिसाइडेड टू गो लाइव ऑन द हियरिंग, देन उसके बाद फिर लाइक नहीं 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 स्टक डाउन इट. ये तो खैर आजकल चल ही रहा है. पब्लिक डोंट वांट. पॉलिटिक्स इज समथिंग जिसमें आप नैरेटिव वॉर खेल रहे हो मेजरली, एंड द करंट बिगेस्ट पार्टी दैट इज बीजेपी doesn't want others, like citizens, to get the narrative of other particular parties. For example, जो अभी रिसेंटली मोदी जी का एड्रेस टू नेशन था, उसके अगेंस्ट लोगों ने डिमांड की कि state machinery is being used, and for the same period of time the opposition should be given state machinery to express what they felt in that particular bill, but वो नहीं मिला. खैर, why he refused, he gave a proper reasoning. So first he said, Kejriwal said, stated in a letter to judge that his hope of getting justice from her court has been shattered. He cited a concern over the judge's alleged association with certain organization and potential conflict of interest regarding her children's professional role. तो उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया कि भैया आपके यहाँ से जस्टिस मिलने के जो मेरे सपने थे, दैट इज बीइंग शैटर्ड. और रीजन बड़ा सिंपल है, आपका एसोसिएशन विद सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन and potential conflict of interest regarding your children's professional roles, right? He also mentioned about the satyagrah, right? Satyagraha role, yes, Satyagraha approach actually. Invoking Mahatma Gandhi's principle, Kejriwal characterized his refusal as a satyagraha, right? Peaceful protest, asserting that his participation would serve no meaningful purpose, given his lack of trust in the court's impartiality. सो उन्होंने बोला कि हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है. सो अगर हम जाते भी हैं तो दैट वोंट मेक एनी सेंस. सो दिस इज माय सत्याग्रह कि हम इसको पीसफुली क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. Justice Sharma has previously dismissed the recusal plea as being based on the mere conjecture, correct, emphasizing that the litigant discomfort or perceived bias cannot decide dictate the judicial recusal. Kejriwal has reserved his right to challenge the judge's decision in the Supreme Court. So मैंने बोला था कि अभी यहाँ पे रुकने के बाद he is going to challenge the decision in the Supreme Court, and that is what is going to happen, right? Even मतलब अगर मैं बात करूं what is going to happen next, even if Arvind Kejriwal is not in the court or he is not being represented by any lawyer in the court, right, तब भी the proceeding is going to be there. तब भी केस जो है उनके एब्सेंस में चलता रहेगा, and then finally वो जजमेंट वगैरह आएगा which is going to be challenged in the Supreme Court by Kejriwal himself. That is what they are planning. Government in 2015 had ordered the social media platform to take down more than 24,000 posts, which is double from 2024. Few years back, Kejriwal saying the fight election in Gujarat, the hype was great and BJP party. See, when it comes to a functioning democracy,
राइट, मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिफोर दिल्ली इलेक्शन एंड लोकसभा इलेक्शन, अरविंद केजरीवाल was jailed. His major political leadership in the Aam Aadmi Party was jailed, and that was not democratic. Then for now, abhi Raghav Chadha plus six. Right. These are the people who went to Bharatiya Janata Party. The Aam Aadmi Party has already put an application for hearing ki whether they are qualified to be MP or not after this defection, right? But before that, only Rajya Sabha has already accepted the merger. So कल मैं संजय सिंह को सुन रहा था. He's the leader of Rajya Sabha from the Aam Aadmi Party. He said we are going to challenge it in front of the chairman of Rajya Sabha itself, and if we are not getting a proper response from him, we are going to challenge it in the Supreme Court as well. तो democratic function and other particular thing is something जो थोड़ा सा अभी questionable है. मतलब काफी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि डिस्कस होनी चाहिए, and especially between the youth. तो let's hope for the best. Uh, हाँ, that can be given, but मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है अभी होगा. So this was the what we can say major important news for today, right? जिसके notes आपके पास होने चाहिए. And let's see क्या scene है क्या नहीं है. Will not appear in front of the Delhi High Court Justice Kejriwal. We have discussed about it. राइट कि क्या उन्होंने बोला क्या नहीं. इंडिया न्यूजीलैंड साइंड अ हिस्टोरिक ट्रेड डील. तीन चार रीजन से दिस पर्टिकुलर डील इज हिस्टोरिक. नंबर वन, वन ऑफ द फास्टेस्ट. So the discussion was discussion was being done like from the long back. I'm not sure about the timeline, but from last year March to this particular April, we have finalized the deal. We have signed the deal. Now both the countries are supposed to ratify the deal, right? So it might take another 6 months, maybe 6 to 8 months. So there are chances that 2026 December might be the time, or Jan 2027 जब ये पर्टिकुलर डील अफेक्ट में आएगी, राइट? तो ये चीजें जो हैं वो थोड़ा सा अभी भी है, वेट करने के लिए है. बाकी whatever happened in whatever provisions were in this particular what we can say uh, डील was, हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया. तो इफ यू हैवंट सीन इट, कल आप वो कर सकते हो. Iran offers to reopen Strait of Hormuz if the US lifts the naval blockade and ends the war. So हमने हिस्ट्री पे डिस्कशन कर लिया क्या है क्या नहीं है. Chairman of Rajya Sabha, right, recognizes the merger of AAP defectors with BJP. मैंने बोला ना वो इतनी फास्ट हो रहा है चीजें, लाइक इतनी फास्ट हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्यों. बट हाँ, they have accepted it. So 7 members, Raghav Chadha, that is Ashok Mittal, Harbhajan Singh, Rajendra Gupta, Sandeep Pathak, Vikramjit Sahani, and some Swati Malini, मैं नाम भूल गया था. Right, so they all were now being called as the BJP MP. Aam Aadmi Party on their behalf, they rejected what happened in Rajya Sabha. Right, संजय सिंह जो राज्य सभा में आपके लीडर, मैंने बोला था कि पिटीशन जो है ऑलरेडी उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बात की है, मतलब डाल दी है, स्टेटिंग दैट दिस इज द वायलेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ एंड द 10th शेड्यूल. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है क्या नहीं होता है. फिर न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ खास नहीं था. नाउ इलेक्शन आर बीइंग स्टॉप्ड. चेयरमैन किसी पार्टी का नहीं होता टेक्निकली. So there are certain designation which doesn't belong to any political party. For example, we don't call Prime Minister of BJP, we call it Prime Minister of India, Speaker of Lok Sabha of India, the Chairman of Rajya Sabha of India, or the Vice President of India, or the President of India. They don't belong to any party, guys. So technically, their act should be neutral. Their act should be in that kind of sense where they can actually sense right and wrong. But ठीक है, क्या करें. So Kejriwal refused to appear before the Delhi High Court judge. ये अपन डिटेल में बात कर ली थी. Then comes 17 lakh arrested in last 10 years for violating the liquor ban in Bihar. आइए ना हमरा बिहार में. So बिहार में liquor ban है, and in last 10 years 17 lakh people arrested against that particular ban. So they are the people who are either smuggling liquor, consuming liquor,
distributing liquor, and the cases are huge. मतलब क्या बोलो, 10 साल में 17 लाख people were arrested for the liquor violation, liquor ban violation. Okay, so टेक्निकली इंडिया में इस इन नहीं चलता, खैर ठीक है, नहीं चलता तो क्या कर सकते हैं। खैर उसके बाद एक और न्यूज है, जो होम सेक्रेटरी हैं, दे हैव रिव्यूड द सिक्योरिटी सिचुएशन इन मणिपुर अमिड अनरेस्ट। देखो हाउ इंटेलिजेंट दीज पीपल आर। इलेक्शन का कैंपेन खत्म हुआ, नाउ दे सेड कि अब हो गया, ठीक है, इलेक्शन हो गया ना, नाउ वी कैन रिव्यू द सिक्योरिटी सिचुएशन इन मणिपुर। चाचा स्टार्टिंग अप्रैल से मणिपुर जो है वापस भयंकर तरीके से चलने लगा है, बट क्या कर सकते हैं। खैर दिस इज समथिंग, दिस इज द प्रॉब्लम विद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर वेरी स्लो, राइट, वेरी स्लो। The Manipur violence is happening, the Manipur is burning from last 3 years, right? And still we don't we cannot see any particular what we can say positivity. One of my friend reported from there, he's a journalist, and he said that there are like approximate 50,000 to 70,000 people who are living in tents and in the what we can say uh, kind of refugee camps. The students, the kids are not going to school, the internet is banned, right, and people doesn't care about it. So ये वो पर्टिकुलर चीज है जिसपे हमें खड़े होने की जरूरत है। आई मीन क्या करेंगे 2023 मई से भाई साहब, मणिपुर इज हैविंग एन अनरेस्ट, एंड दिस इज अगेन अनदर 2020 मई 2026 दैट इज कमिंग, राइट। सो चीजें हैं, होम सिक्योरिटी को आगे क्या, खैर, हाँ, दैट इज समथिंग लाइक दिस, वो रेफ्यूजी कैंप जैसी सिचुएशन ही है। चिल्ड्रंस आर एक्चुअली लिविंग इन टेंट। अब सोचो यार, 3 साल से तुम स्कूल नहीं गए हो, 3 साल से योर होम इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, यू आर लिविंग इन कैंप्स लाइक स्ट्रक्चर कि जहाँ पे आपको खाना भी बाहर से आ रहा है, यू नॉट गेटिंग इंटरनेट, यू नॉट गेटिंग एजुकेशन प्रॉपर। सो प्रॉब्लम तो है ना, इट्स बीन 3 years, दिस इज अ part of our country, integral part of our country. So we failed as what we can say integral brotherhood. So खैर ठीक है, let's hope for the best. अब चाचा आए एक्शन में। Though Amit Shah is going to Ladakh on 30th of April and 1st of May, right? I still don't see any particular action, any particular response for this particular situation. There is one particular tweet in the Twitter, जो मतलब X में जो मैंने देखा था, in which it is saying कि the companies that is being deployed in Bengal for election, right? If half of the companies of CAPF would have been deployed in Manipur, there would have been peace and a restoration of all things. But motive नहीं है country के पास, government के पास, right? Yes, motive नहीं है, objective नहीं है, तैयारी नहीं है कि हमें ये करना है। इलेक्शंस आर समथिंग जो ज्यादा वो होने लगा। आई मीन आवर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग कैंपेनिंग ऑन द डेली बेसिस। आई एम नॉट श्योर हु इज रनिंग द डेली, and the government is treating them like criminals for protesting and asking for the betterment of themselves. Yeah, discredit karna, that is one particular thing I'm seeing from last 7 8 years, from the 2019 itself, 2018 2019 जब से चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं, देन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2019 द फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर्स को डिस्क्रेडिट कर दिया खालिस्तानी बोल के, देन लद्दाख पाकिस्तानी बोल के, यू कैन सी अ रीसेंट नोएडा प्रोटेस्ट वेयर वर्कर्स डिमांडेड द प्रॉपर वेज फॉर देयर वर्क, उनके साथ पाकिस्तानी एंगल लगा दिया उन्होंने। यस, सो डिस्क्रेडिट करना तो आज के टाइम पे मीडिया एंड गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनका सबसे बढ़िया काम है, राइट। आप बोल दो कि भाई नहीं नहीं ये अपने से कर ही नहीं रहे, हमारे पड़ोस में एक देश है पाकिस्तान, राइट, ही इज दैट सॉर्ट ऑफ वीक कंट्री whose prime minister sit down and stand up when the American president is saying, sit down, stand up, right? And they are capable of infiltrating our nation.
राइट, इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव. सो हर जगह पे पाकिस्तान एंगल डाल देते हैं. दैट इज व्हाट दे डू. Discussing Chabahar port issue with the Iran and US says center. So Randeep Jaiswal, who's the spokesperson of Ministry of External Affairs, he said they are discussing how and what we can do in Chabahar port with Iran and US. In the last, what we can say, February, we have to leave from that particular 23-year-old project. Now they are saying कि the discussion is on. The current conflict जो है वो थोड़ा सा affect तो कर रहा है, but we can get it. Right? चलो. Campaign season end, party switches to the silent mode. Silently छोड़ो. Okay. Rajnath Singh is in Bishkek for the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministerial Meet. राइट, थोड़ा शंघाई एससीओ के बारे में नोट्स जो है उसको अपडेट रखना है ना. लास्ट ईयर पूछा था शायद. आ, ये और ये दोनों जो है वो पढ़ लेना. दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ गैंग्स ऑफ सेवन, दिस इज अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड 10 शेड्यूल के बारे में कि हाउ द 10 शेड्यूल वाज सपोज्ड टू वर्क एंड हाउ इट इज वर्क. द थिंग इज एंटी डिफेक्शन लॉ वाज समथिंग दैट वाज सपोज्ड टू stop the movement from one party to another, but it is being misused. एंड ये आर्टिकल जरूर पढ़ना. दैट इज पीडीटी आचारी. रिमेम्बर जब ये इवेंट हमने सबसे पहले डिस्कस किया था तो ही वाज द वन जिनको मैंने कोट किया था. राइट. तो मेक श्योर करो कि इसको जरूर पढ़ना. ही इज अ वेरी नॉलेजेबल वर्क. क्या कह रहे हो सर? यू हैव सम डिफरेंट टॉपिक ऑन योर पेपर एंड ऑन डिफरेंट नंबर, व्हाई इज दैट? मतलब ओ, इंटरनेशनल एडिशन इसलिए डिफरेंट दिख रहा होगा. ठीक है. देन थोड़ा सा, if you want to know कि how long the American president can push his madness, right? This is something which you can read. The legal limits on the US war involvement. This will tell you what are the power of the Trumps, the administration क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह. तो you can read it. That this is an international edition. You cannot see any advertisement here. राइट. हाँ, यहाँ पे एड्स नहीं दिखेंगे तुम्हें. सो बाकी जो होते हैं उसमें आधा तो एड्स में निकल जाता है, जिससे हो सकता है तुम्हारा दिल्ली एडिशन हो या मुंबई या दूसरा किसी मेट्रो सिटी का. ठीक है. सो फर्टिलाइजर्स सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग स्टेबल वेल मैनेज से सेंट्रल. सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि जो वो है फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कंडीशन, उनकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है. For Kharif season 2026, Ministry of Fertilizers has assessed requirement of 390.54 what we can say lakh metric ton of the current available stock of 190 lakh metric ton. 49% of the requirement says additional security. हाँ, मुंबई वाले एडिशन में होगा, उसमें एड्स होंगे. यस, मैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ता भी हूँ. You have Chandrababu Naidu and Modi ji in entire front page. Thank God I don't have that sort of front page कि मैं नेताओं की फोटो ही देखता रहूं. अभी रिसेंटली मिड डे मील के बैग्स जो होते हैं स्टूडेंट्स को जो बैग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें भी मोदी जी की फोटो थी. गवर्नमेंट डजंट foresee any requirement for importing petrol or diesel, says ministry. राइट. कुछ नहीं कह सकता. आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन पेट्रोल और फ्यूल और डीजल. The political expert and others are saying that this is something which is going to create huge mess because people are going to get the costly fuel. The government is strictly denying कि हमारे पास कोई ऐसा proposal भी नहीं है जिसके थ्रू हम ये कह सके कि भैया हम फ्यूल प्राइस बढ़ाने वाले हैं पेट्रोल और डीजल की. तो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट टुमारो इज द इलेक्शन डे और उसके बाद पता नहीं. देयर वाज अ होल पेज डेडिकेटेड टू गलगोटिया यूनिवर्सिटी यस्टरडे. सो उसमें एड जो था उसमें क्या वो आया था, कुत्ता आया था गलगोटियास का, ओरायन. सो इंटरनेशनल
जो वो है क्या कहना चाहिए इवेंट्स हैं उसमें ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड जो है दैट इज गोइंग टू बी यूएस फॉर 4 डे स्टेट विजिट राइट बहरीन रिवोक सिटीजनशिप ऑफ डजन्स ऑफ ओवर ईरान लिंक्ड एक्टिविटीज सो बहरीन ने ईरान से लिंक होने के कारण काफी लोगों की जो वो है क्या कहना चाहिए सिटीजनशिप उसको हटा दिया Carney launches Canadian sovereign wealth fund to cut US dependency. Right. Pope Leo prays with first women Anglican leader for the historic meet. Right. Hezbollah rejected Israel Lebanon direct talks on sport to end the war. Hezbollah को अभी भी पार्टी नहीं बनाया गया है Israel and Lebanon peace talk में, so it is not happy with that. That you can say. Right. US shooting suspect charged with the bit of assassin need Trump. Right. ट्रम्प की अपनी पब्लिक द अमेरिकन पब्लिक आर स्टिल डोंट बिलीविंग इट कि दिस इज समथिंग दैट इज हैपन आई मीन आई हैव सीन अमेरिकन स्पाई फिल्म्स द सीक्रेट एजेंट्स राइट दे द न्यूज आई यूज्ड टू गेट इज वो पूरे का पूरा एरिया ही सील कर देते हैं कि वहां पे तो कोई आ ही नहीं सकता सस्पेक्ट वहां पे एक आदमी जो है राइट दैट इज एंटरिंग इन अ स्ट्रीट ऑफ व्हाट कैन से स्पॉन्सर्ड डिनर right with the shotgun with the handguns with the knife and they were not aware about it right so people are like कि नहीं भाई this is something which is being what we can say staged which is being created just to make sure that people should have a diversion from the Iran war from the Epstein file and so that they can vote for the Donald Trump so that they can make the America great again. Okay, China blocks a meta acquisition of an AI startup, Manus amid the US tech rivalry. So तुम हमारे refinery block करो, हम तुम्हारे acquisitions block करेंगे. That is what they are playing. ठीक. Ukraine Western Asian conflict put attacks of drone in the heart of modern warfare. और हम ड्रोन में क्या बना रहे हैं हमें पता भी नहीं है. Nobody is talking about it कि हमारा expertise कहाँ है. हमारे पास दो प्यारे पड़ोसी देश हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं. That is Pakistan and China, and they both are nuclear capable. इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा. भुवनेश्वर हेजलवुड blows away DC. भाई मैंने इनकी बॉलिंग देखी यार. When this particular match started, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था. We were supposed to get a person to what we can say install the entire inverter thing, right? But वो भाई गायब था. नहीं आया. I was watching the match. I'm not sure why Indians are not getting Bhuvneshwar Kumar in the team. This guy still have that beauty of swing. Mohammad Shami, this Bhuvneshwar Kumar, we need these people back to the right. CIA and FBI in films, they are like even dictate what President breathe. Meanwhile in reality, they are shit people. If they are trying to get some sympathy for MAGA God, Shady. हाँ हाँ अरे मुझे याद है यार जब डोनाल्ड ट्रम्प का इलेक्शन हो रहा था वापस तो देयर वर इंडियन जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए प्रे कर रहे थे आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज सम पर्सन जिसने डोनाल्ड ट्रम्प की मूर्ति लगा के पूजा भी की थी इंडिया नॉट फॉर बिगिनर्स ट्रम्प लोग भी सोचते होंगे भाई क्या चल रहा है so this was it for today's news I hope you guys enjoyed it right make sure to like it subscribe it share it or read it. All right. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. दक्ष मैंने कल तुम्हारा कमेंट क्वेश्चन वाला थोड़ा सा लेट देखा था राइट सो उस पे कुछ अपडेट्स हम करने वाले हैं जो भी होगा we'll update soon. So this is it from my side. See ya guys. Good day. Thank you, Jadu. Thank you. Thank you.